अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ये अकेडमी। तो यहाँ पे हम स्पीक जेंटली पोएम के MCQs देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल से। इसके अलावा हमने समरी और इसकी एक्सप्लेनेशन समझी थी, पोएम की समरी क्या है और पोएम की समरी और मोरल क्या है, ठीक है, यानी कि लेसन क्या है। आज हम सिर्फ MCQs को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने समझा दी है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके अलावा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और MCQs की भी तैयारी हमने कर ली है। लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर। सिंधी की एक्सप्लेनेशन की चैप्टर लेक्चर अवेलेबल हैं मेरे चैनल के ऊपर। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस के नोट्स, MCQs सॉल्व और सारे ही क्वेश्चन आंसर्स को हमने समझा था एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो भी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। द पोएम स्पीक जेंटली इज रिटन बाय डेविड बैट्स। इट इज़ गुड टू रूल बाय लव। पोएम किस बारे में है, क्या समरी है, ये सब कुछ हमने समझा, तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। harsh words mars, we should speak gently, ठीक है। To gain love or a little child we should dash speak gently. The good we may do while talking is speak gently. We should teach or tell something to a child in a soft and mild accent. माइल्ड कहते हैं बेसिकली नरम या अच्छे लहजे को। एज द पीपल वी शुड नॉट डैश ग्रीव देम, बुरा भला नहीं कहना चाहिए हमें ओल्ड पीपल्स को, ठीक है। एंड्स ऑफ द लाइफ आर नियरली रन मीन्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इज स्पेंड, ठीक है। ही शुड बी लेट डिपार्ट इन द पीस डैश द एज वन यानी कि बूढ़े लोग। अ लिटिल थिंग इज डैश स्पीक जेंटली। दिस ड्रॉप इन द हार्ट डीप वेल speaking gently. This may bring the good. The gently speaking. Eternity means the life after death. The poem tells about moral. The main idea of the poem is speaking gently with all people. By speaking gently, we attract people's love. Speak gently is something small. We should have good results of speaking kindly in the world. We should speak kindly to the old people because they will leave the world shortly. Speak gently is better far to rule by love than dash fear. Speak gently, let no dash word mar the good we may do here. ये सारे ही जो वर्ड हैं जो मैंने आपको पहले भी पिछली पोएम में भी बताया था, काफ़ी ज़्यादा वर्ड ऐसे थे जो अब इंग्लिश के अंदर यूज़ नहीं होते। ये पुरानी इंग्लिश के वर्ड्स हैं। जिस तरह से उर्दू के भी काफ़ी अल्फाज अब यूज़ नहीं होते, इसी तरह से इंग्लिश के भी काफ़ी ज़्यादा अल्फाज अब यूज़ नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये मार का मतलब ऊपर भी बताया था हार्श वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये पोएम की ही लाइंस हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्पीक जेंटली टू द एज वन, grieve not to careworn dash hurt, whose sands of the life are nearly run, let such in the peace dash depart. Speak gently, this a little thing, dropped in the heart's deep dash well. The good, the joy that it may bring, dash shall tell eternity. Speaking gently to the little child, its dash be shorn again love. Teach it in accent soft and dash it may not long remain mild. The theme of the poem Speak Gently is that we should be very careful in our dash. We will be rewarded after speaking gently. Speech. यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैंक्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पेपर के लिहाज से, तो हम उसको भी देख रहे हैं हर चैप्टर में जिसमें इंपॉर्टेंट हैं। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय एनोनिमस पोएट। इस पोएम का कोई नाम नहीं पता जिस शायर ने इसको लिखा है। एनी anonymous poem does not bear the name of its poet. Speaking Gently is the poem about the value of kind words. Speaking gently to child if you wanted to gain his love. We should speak gently in everybody because it is better to rule by love than by fear. It costs nothing to speak gently. If you speak kind and gentle words, you would be rewarded in next world. ये सही कर लीजिएगा, next world है। The world eternity means the world hereafter. We should speak gently to the aged ones because their hearts are full of worries, whose sand of life are nearly run. This lines refer to the old people. So ये थे आज के हमारे MCQs और फिर प्लैंक्स। इसके अलावा समरी और एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी समझी हुई हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये पोएम समझ नहीं आई वो मेरे चैनल पे जाके देखें, इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर सारे ही एक्सप्लेनेशन है। मैंने उर्दू में समझाया है कि पोएम में क्या कह रहे हैं, चैप्टर में क्या कह रहे हैं और मोरल क्या है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो टिल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।